Hello students, welcome all of you. In this video, we will discuss a very important topic in quantum mechanics, Pauli exclusion principle for M.Sc. semester 1 course in lecture number 2. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एमएससी सेमेस्टर 1 कोर्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज no two particles obeying Fermi-Dirac statistics, that is fermions. For example, electron is a fermion, proton is also a fermion, neutron is also a fermion having a spin half particles. Fermions are a spin half particles obeying Fermi-Dirac statistics. So, no two particles obeying Fermi-Dirac statistics, that is fermions, can exist in the same quantum state, or no two particles or fermions, say electrons, that is two electrons, can not have the same set of quantum numbers, or no two electrons, that is fermions, have the same value of all four quantum numbers. This statement is called Pauli exclusion principle. Two fermions, say electrons, protons, etc., or two particles जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, दैट इज टू फर्मियंस के ऑल क्वांटम नंबर्स के सभी क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, और टू पार्टिकल्स जो कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, जो फर्मियंस कहलाते हैं. तो दो फर्मियंस सेम क्वांटम स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकते. इसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है. नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. The statement is no two particles having no two particles obeying FD statistics, that is Fermi-Dirac statistics. Those particles which obey Fermi-Dirac statistics are called fermions. For example, electrons, protons, neutrons, etc. are fermions. So, statement of Pauli exclusion principle is no two particles obeying Fermi-Dirac statistics. That is two fermions. Say two electrons, two fermions, say two electrons
cannot have or cannot exist in the same quantum state. सेम क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट. और टू फर्मियंस कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ all quantum numbers, all four quantum numbers. दो फर्मियंस के लिए, टू फर्मियंस के लिए, सपोज टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑल क्वांटम नंबर्स का वैल्यूज सेम नहीं हो सकता. So no two particles obeying Fermi-Dirac statistics, that is fermions, two fermions, say two electrons, cannot exist in the same quantum state, or two fermions cannot have the same set of quantum numbers. And this statement is called Pauli exclusion principle or Pauli's exclusion principle. This statement, or it is called this statement, or it is called Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle can be explained as, suppose 1s state having two electrons. 1s means 1s2. Configuration of 1s is 1s2. 1s स्टेट में s ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. So 1s state is 1s2. For both electrons, we have for the first electron, this is for first electron, the number of principal quantum number is n is equal to 1. So n is equal to 0, that is n minus 1. And Muthal quantum number is n minus 1. Magnetic quantum number is minus L to plus L. And Muthal quantum number L is 0 to n minus 1, that is n minus 1 is 0. So Muthal quantum number for n is equal to 1. For 1s state, n is equal to 1. And Muthal quantum number n is equal to 0. Magnetic quantum number is from minus L to plus L, that is minus 0 to plus 0, that is 0. And the spin is, if the spin of the first electron is plus half, then for the second electron, we have n is equal to 1 for 1s state, n is equal to 0, and Muthal quantum number is 0, magnetic quantum number is 0, but the spin s is equal to minus half. So it is clear that the set of quantum numbers, 4 quantum numbers for both electrons are not the same. N, L and M for both electrons are the same, but the spin is not same. A spin for the first electron is plus half, and for second electron a spin is minus half. तो 1s स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. कंफिगरेशन इज 1s2. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n इक्वल टू 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू माइनस l टू प्लस l, दैट इज 0 टू 0, माइनस 0 टू प्लस 0, दैट मीन्स 0. माइनस 0 का कोई मीनिंग नहीं है. एंड स्पिन इज प्लस हाफ. इफ स्पिन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज प्लस हाफ, suppose it is up spin, then for second electron, principal quantum number, value of principal quantum number n is equal to 1, azimuthal quantum number n is equal to 0, magnetic quantum number n is equal to 0, but the spin is down spin, that is minus half. This explains the Pauli exclusion principle.
यह पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है, कि व्याख्या करता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते, या टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए और 4 क्वांटम नंबर्स का सेट इक्वल नहीं हो सकता। n, l एंड m का वैल्यू बोथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वन एस स्टेट के बोथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। इट इज इन द अकॉर्डेंस विथ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यह एग्जाम्पल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार है। नाउ प्रूफ ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। First of all, suppose two identical particles, 1 and 2. So, for two identical particles, 1 and 2, the wave function for both particles, both identical particles, can be expressed as psi under bracket 1 and 2. And it can be expressed as the product of wave functions of the individual particles. So psi 1 2 can be expressed as psi 1, that is wave function of the first particle psi under bracket 1 multiplied by psi under bracket 2. Or it can be, that is the wave function for two identical particles 1 and 2. There are two particles only in this case. And it is equal to psi under bracket 1 multiplied by psi under bracket 2. That is, the wave function of two identical particles 1 and 2 can be expressed as the product of wave functions for the individual particles. That is psi 1 multiplied by psi 2. And it can be stated as, it can be expressed as, it can also be expressed as psi n1 1 multiplied by psi n2 2, where n1 and n2 are two quantum states which represent a set of quantum numbers in both states n1 and n2. So psi 1 can be expressed as psi n1 1 multiplied by psi n2 2, that is where n1 and n2 are two quantum states in which both particles can exist. Say number 1 particle exists in the quantum state n1 and number 2 particle exists in quantum state n2. Number 1 particle, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सपोज किया जाए कि क्वांटम स्टेट n1 में है, तो वेव फंक्शन क्वांटम स्टेट n1 के लिए psi n1, उसमें फर्स्ट पार्टिकल है, एंड n2 क्वांटम स्टेट जिसके लिए वेव फंक्शन psi n2 है, उसमें नंबर 2 पार्टिकल है. Since suppose it is equation number 1, since both particles 1 and 2 are identical, so they can be exchanged. That is, number 2 particle can exist in n1 state and number 1 particle can exist in n2 state. Then the wave function for 2 particles we can write psi 1 2, or we can, if they are exchanged, then we can write psi 2 1 equals to psi n1 2 and multiplied by psi n1 psi n2 1 under bracket 1. That is पार्टिकल का अब एक्सचेंज हो गया, तो नंबर 2 पार्टिकल अब नंबर 2 पार्टिकल n1 स्टेट में आ गया, हो सकता है, एंड नंबर 1 पार्टिकल, पहले नंबर 1 पार्टिकल n1 स्टेट में था एंड नंबर 2 पार्टिकल n2 स्टेट में था. अब जब पार्टिकल का एक्सचेंज हो गया है, तो वी कैन राइट द वेव फंक्शन फॉर 2 पार्टिकल एज psi
2, 1 as psi n1 under bracket 2 multiplied by psi n2 under bracket 1. दैट इज पार्टिकल का एक्सचेंज हो गया. अब n1 स्टेट में नंबर 2 पार्टिकल है, जबकि n2 स्टेट में नंबर 1 पार्टिकल है. सो वेव फंक्शन फॉर both identical particles which are now exchanged is psi under bracket 2 1 2 comma 1 under bracket close is equal to psi n1 under bracket 2, that is number 2 particle. Now number 2 particle is now present in state n1 and number 1 particle, that is 1, now exists in or can present in the quantum state n2. Suppose it is equation number 2. Since both particles are identical, so they can be exchanged in 2 quantum states, that is n1 and n2. दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने के कारण बोथ क्वांटम स्टेट्स n1 एंड n2 में एक्सचेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज किए जा सकते हैं. नाउ सिंस psi 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस psi 21, सिंस psi 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस psi 21, and we know that for the symmetric wave function, if particles are exchanged, then wave function of the symmetric, then the sign of symmetric wave function remains unchanged, that is plus sign. But for the antisymmetric wave function, if particles are exchanged, then the sign of the wave function is also changed. That is, the sign of wave function for antisymmetric wave function becomes negative. So for antisymmetric wave function, psi 12 equals to minus psi 21, and for the symmetric wave function, psi 12 equals to plus psi 21, that is sign of the wave function is not changed if the particles are exchanged. So we can write psi 12 is equal to plus minus psi 21. For the symmetric wave function, psi 12, that is psi s 12 is equal to plus psi 21, and for antisymmetric wave function, that is psi a stands for antisymmetric, 12 equals to minus psi 21 under bracket 21. Since fermions are defined by the antisymmetric wave function, क्योंकि फर्मियंस को एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस के द्वारा डिफाइन किया जाता है. एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के द्वारा फर्मियंस को डिफाइन किया जाता है. इसलिए फर्मियंस के केस में, सपोज किया जाए इलेक्ट्रॉन्स के केस में, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम 2 फर्मियंस और 2 पार्टिकल्स ओबेइंग फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, दैट इज फर्मियंस, say 2 electrons, say 2 protons, these are fermions. तो चूंकि फर्मियंस एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के द्वारा डिफाइन होता है, इसलिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के केस में माइनस साइन का यूज होगा. तो साई एंटीसिमेट्रिक के लिए साई ए 12 इक्वल्स टू माइनस साई ए अंडर ब्रैकेट 21. देयरफॉर both equations 1 and 2 can be combined after exchange of 2 particles, after the exchange of 2 particles, as a resultant wave function, which can be expressed as psi dash. So the resultant wave function, the resultant wave function of the wave functions represented by equation 1 and 2 after exchange
of two particles. So the resultant wave function can be expressed as psi dash. Now it is psi dash, which is antisymmetric function, or psi antisymmetric. For antisymmetric, a small is taken. So the wave function for antisymmetric, that is antisymmetric wave function, is psi a, psi dash or psi a equals to some constant, which is normalization constant capital A, under bracket we can write it as psi n1 under bracket 1 multiplied by psi n2 under bracket 2 minus, since there are two fermions and fermions are defined by antisymmetric wave functions, antisymmetric wave function. Therefore sign of the wave function, sign of the antisymmetric wave function is changed. That is, sign of the antisymmetric wave function becomes negative when the particles are exchanged. Here two particles 1 and 2 are exchanged. Then for two fermions, say for 2 electrons, we can write the sign of the wave function. That is, the sign of the wave function is changed. So we can write the sign of the wave function negative. And for symmetric wave function, there is no change in sign. In that case, we can take plus sign. But here we can take minus. We will take certainly minus sign for two fermions. So we can write the resultant wave function for the antisymmetric wave function psi dash or psi a equals to some constant a, which is the normalization constant under bracket psi n1 under bracket 1 multiplied by psi n2 under bracket 2 minus psi n1 under bracket 2. अब n1 स्टेट में नंबर 2 पार्टिकल का एक्सचेंज हो गया, तो psi n1 2 मल्टीप्लाइड बाई psi n2 1 ब्रैकेट क्लोज्ड. अब फर्स्ट पार्टिकल n2 स्टेट में एंड सेकेंड पार्टिकल n1 स्टेट में एक्सचेंज हो गया, since both particles are identical. So the resultant wave function, that is antisymmetric wave function, can be expressed as psi dash or psi a equals to some constant capital A, which is the normalization constant under bracket psi n1 under bracket 1 multiplied by psi n2 under bracket 2 minus psi n1 under bracket 2 multiplied by psi n2 under bracket 1. Now the value of A can be obtained by using the normalization condition, that is integral psi star psi d tau is equal to 1. The value of A for two particles, we can obtain it as A equals to 1 by root 2. Therefore, suppose it is equation number 3, the resultant wave function or antisymmetric wave function. It is expressed by equation number 3. So, the value of capital A, that is normalization constant, we can obtain by using the normalization condition integral over tau psi star. Tau is the entire volume space. So integral over tau psi star psi d tau is equal to 1, and we will get the value of normalization constant capital A equals to 1 by 2 for two particles, two identical particles. So the value of capital A is equal to 1 by root 2. So equation 3 can be now expressed as the resultant wave function, that is antisymmetric wave function, as psi dash or psi a. A stands for antisymmetric and psi is the symbol of wave function, equals to, in place of A we can write 1 by root 2 under bracket psi n1 is the first quantum state, psi n1 under bracket 1. जब नंबर 1 पार्टिकल n1 स्टेट में है तो उसका वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे psi n1 अंडर ब्रैकेट 1, एंड जब सेकेंड पार्टिकल n2 स्टेट में है तो उसके वेव फंक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे, उसके वेव फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं psi n2 अंडर ब्रैकेट 2 माइनस, अब पार्टिकल का एक्सचेंज हो गया बोथ क्वांटम स्टेट्स में, तो अब नंबर 2 पार्टिकल n1 क्वांटम स्टेट में हो सकता है
प्रेजेंट हो सकता है, जबकि नंबर 1 पार्टिकल N2 क्वांटम स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। तो माइनस साई N1 अंडर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई साई N2 अंडर ब्रैकेट 1। जब नंबर 1 पार्टिकल N2 स्टेट में एक्सचेंज कर गया तो उसके लिए उसके वेव फंक्शन को, उस क्वांटम स्टेट के वेव फंक्शन को हम साई N2 अंडर ब्रैकेट 1, दैट इज particle 1 is now present, now exchanged in the quantum state N2 from the quantum state N1। पार्टिकल 1 क्वांटम स्टेट N1 से क्वांटम स्टेट N2 में चेंज कर गया, जबकि पार्टिकल 2 क्वांटम स्टेट पहले फर्स्ट केस में, फर्स्ट सिचुएशन में पार्टिकल नंबर 2 क्वांटम स्टेट N2 में था, लेकिन अब क्वांटम स्टेट N1 में आ गया, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। And the value of normalization constant we can obtain A is equal to 1 by root 2, और उसके लिए normalization condition psi star psi d tau is equal to 1 का यूज किया जा सकता है। मतलब यह नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, दैट इज इंटीग्रल psi star psi d tau is equal to 1, और इसके हेल्प से कांस्टेंट A का वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट A का वैल्यू 2 पार्टिकल्स के लिए 1 by root 2 ऑब्टेन किया जा सकता है। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4, द रिजल्टेंट वेव फंक्शन साई डैश और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन इज। नाउ इफ वी सपोज N1 इज इक्वल टू N2, अगर दोनों क्वांटम स्टेट इक्वल है, इफ N1 इज इक्वल टू N2, इफ N1 इज इक्वल टू N2, देन N1 इज इक्वल टू N2, तो यह जो डिफरेंट ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वह 0 हो जाएगा। इक्वेशन 4 के अंदर का ब्रैकेटेड टर्म 0 हो जाएगा। इफ N1 is equal to N2, then bracketed term of equation 4 of the resultant wave function psi dash or antisymmetric wave function psi A becomes 0. So in that case psi dash or antisymmetric wave function, resultant wave function or antisymmetric wave function for two fermions is equals to 0, which is not possible, which is this that is psi dash is equal to 0 if N1 is equal to N2, both quantum state सेम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन वह रिजल्टेंट वेव फंक्शन जो है वह psi dash और psi A का ही वैल्यू 0 हो जाएगा, which is not possible. It is against the Pauli's exclusion principle. So it is clear that if two quantum states are equal, that is N1 is equal to N2, that is if the two particles lie in the same quantum state, the resultant state psi dash और psi A disappear, वह 0 हो जाएगा। It is not possible. So two fermions or two particles obeying Fermi-Dirac statistics, say 2 electrons, cannot present in the same quantum state. That is, the two fermions, say 2 electrons, cannot have the same set of all quantum numbers. This proves Pauli exclusion principle. So it proves Pauli exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Now we can prove Pauli exclusion principle for n identical particles, that is for n fermions also, with the help of a determinant which is called Slater's determinant. So now proof of Pauli's exclusion principle for n fermions, n identical particles. So for n identical
particles or fermions the wave function we have the wave function of n identical particles or n fermions can be expressed as the product expressed as the product of wave functions of the individual particles as before we have done in the case of two fermions. टू फर्मियंस के केस में हम लोगों ने देखा था कि टू फर्मियंस का जो वेव फंक्शन होगा साई 1 2 वह इक्वल उसे एक्सप्रेस किया गया था द प्रोडक्ट ऑफ साई 1 मल्टीप्लाइड बाई साई 2 दैट इज टू पार्टिकल्स का वेव फंक्शन को इस पार्टिकल के वेव फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसे हमने डिस्कस किया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का प्रूफ में टू पार्टिकल्स के लिए, टू फर्मियंस के लिए। उसी ढंग से उसी प्रकार सिमिलरली वेव फंक्शन एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स और एन फर्मियंस के लिए वेव फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ द एन फर्मियंस और एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। सो वेव function of n identical particles or n fermions can be expressed as psi under bracket 1 2 3 and so on to n particles, that is psi under bracket 1 comma 2 comma 3 comma and so on, and in last n if there are n fermions or n identical particles, then it can be expressed as the product of psi 1 into psi 2 or psi n1 अंडर ब्रैकेट 1 psi n2। अगर नंबर 1 पार्टिकल n1 क्वांटम स्टेट में है तो psi n1 उसका वेव फंक्शन psi n1 अंडर ब्रैकेट 1। इफ पार्टिकल नंबर 2 सेकेंड क्वांटम स्टेट में है तो उसके लिए एक्सप्रेस किया जा सकता है psi n2 2, तो psi n1 1 into psi n2 2, that is the wave function for the second particle lies in second quantum state, that is quantum state n2, and wave function of the third particle which lies in the quantum state n3 is psi n3 under bracket 3 and multiplied by so on dot dot, and in last it is the product of psi n capital N state. Psi n is the wave function of the nth particle which present in the or which lies in the which presents or lies in the nth quantum state is psi n under bracket n, that is for the nth particle. And suppose it is equation number 5. Now the antisymmetric wave function for the n fermions can be expressed as, therefore antisymmetric wave function which is denoted by the symbol psi a, सफिक्स में स्मॉल a है for antisymmetric wave function। कैपिटल A भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने कैपिटल A को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिया था, इसलिए यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए psi a यहाँ पर एक्सप्रेस psi a सिंबल से डिनोट किया जा सकता है। तो psi a अंडर ब्रैकेट for n fermions are defined by the antisymmetric wave function, so psi a under bracket 1 2 3 and so on in last capital N, there are n fermions we can express it as in form of a determinant which is known as Slater's determinant. So for n particles the value of a constant is 1 by root under n, and inside the determinant we can write psi n1 in the first row, we can write psi n1 1 in the first row, and in the first column it is psi n1 1, first term is second term of the first row is psi n1 2,
and it is present in the first term of second column also. Psi n1 1, psi n1 1, then psi n1 2 in the first row, psi n1 3, and so on. Psi n1 n, number of particles, nth particle, it is psi n1 n for wave function for the nth particle, nth identical particle, or nth fermions, and it is inside the determinant. And in the second row we have psi. In the second row we have psi n2 1, psi n2. In the second row, psi n2, second term is psi n2 2, and so on, psi n2 3, and psi n2. n2 क्वांटम स्टेट में अगर nth पार्टिकल है, that is psi n2 under bracket n. And similarly, we can proceed further. In the third row, we can write psi n3 1, psi n3 2, and so on, psi n3 n. So in last, we can write psi n, capital N, wave function for the wave function for the nth particle, that is psi small n, suffix में capital N under bracket 1. nn क्वांटम स्टेट है जिसमें अगर फर्स्ट पार्टिकल है तो उसका वेव फंक्शन psi nn 1 अंडर ब्रैकेट 1, psi nn अंडर ब्रैकेट 2 डॉट डॉट psi nn अंडर ब्रैकेट n. This is the last term, and it is all wave functions for the entire n particles are kept inside a determinant which is called Slater's determinant. So it is wave function for the antisymmetric wave function. Antisymmetric wave function for the n identical particles or n fermions is expressed as psi a, which is the antisymmetric wave function under bracket 1, 2, 3, and so on. And in last n, there are n particles equals to 1 by root n. The value of normalization constant a is equal to 1 by root n for the n particles. So 1 by root n determinant, inside the determinant, in the first row psi n1 under bracket 1, psi n2 under bracket 2, and so on, psi n1 under bracket n. In the second row, it is psi n2 under bracket 1, psi n2 under bracket 2. If second particle क्वांटम स्टेट n2 में है उसका वेव फंक्शन psi n2 2 होगा. यदि if फर्स्ट पार्टिकल क्वांटम स्टेट n2 में है तो उसका वेव फंक्शन होगा psi n2 1. And if so in the second row we have psi n2 under bracket 1, psi n2 under bracket 2, and so on, psi n2 under bracket n. यदि nth पार्टिकल n2 स्टेट में है तो उसका वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है psi n2, psi small n2 under bracket capital N. Capital N is the nth particle, and so on. थर्ड रो फोर्थ रो में इसी ढंग से आगे प्रोसीड करेंगे. और इन द nth रो वी कैन राइट psi nn अंडर ब्रैकेट 1. यदि फर्स्ट पार्टिकल nth स्टेट में है, क्वांटम स्टेट में है, तो उसका वेव फंक्शन होगा psi स्मॉल n, सफिक्स में कैपिटल N अंडर ब्रैकेट 1. यदि सेकेंड पार्टिकल क्वांटम स्टेट nn में है तो उसका वेव फंक्शन हो जाएगा psi स्मॉल n, सफिक्स में कैपिटल N अंडर ब्रैकेट 2, एंड सिमिलरली एंड सो ऑन. इफ nth पार्टिकल, इफ n पार्टिकल, तो लास्ट पार्टिकल है n पार्टिकल, वो अगर क्वांटम स्टेट nn में है तो उसका वेव फंक्शन होगा psi स्मॉल n, सफिक्स में कैपिटल N अंडर ब्रैकेट n, एंड inside the determinant, and it is called Slater's determinant. In this determinant, suppose it is this determinant, say it is equation number 6. In this determinant, if we have if we suppose psi n1 under bracket 1 is equal to psi n2 under bracket 1, or psi n1 under bracket 1 is equal to psi n1 under bracket 2, that is
if two or more than two terms in a row, in two rows or two columns of a determinant are same, then that determinant vanishes. So we have if psi n1 1 under bracket 1 equals to psi n2 under bracket 1, or psi n1 under bracket 1 equals to psi n1 under bracket 1 equals to psi n1 under bracket 2, then both rows or that is two terms, it may be more than two terms of both rows or in both columns of this determinant will be the same. Therefore, by using the property of the determinant, this determinant will vanish. Therefore, in that case, we have if psi n1 under bracket 1 is equal to psi n2 1, or psi n1 under bracket 1 is equal to psi n1 under bracket 2, then psi a, that is the resultant wave function or antisymmetric wave function for the n identical particles, it will equal to 0. So 1 by root n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो we have in that case psi a is equal to 0. Psi a for n particles, that is under bracket 1 2 3 to n, will be equal to 0 if psi n under bracket 1 is equal to psi n2 under bracket 1, or if psi n1 under bracket 1 is equal to psi n1 under bracket 2. अगर सपोज किया जाए कि psi n1 1 इक्वल टू psi n2 1 हो जाए, और psi n1 2 और psi n1 1 इक्वल टू psi n1 2 हो जाए, उस सिचुएशन में और psi n1 2 इक्वल टू psi n2 2 हो जाए, तो उस सिचुएशन में एनी टू रोज और टू कॉलम्स में अगर टू और मोर देन टू टर्म्स सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वह डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है. यह डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा. तो इन दैट केस द रिजल्टेंट वेव फंक्शन और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर द n आइडेंटिकल पार्टिकल्स for n fermions will equal to 0, which is not possible. Psi a equals to 0, it is not possible. Therefore, it will be against the Pauli exclusion principle. Therefore, two or more than for n fermions, they cannot have the same set of all quantum numbers, or they cannot exist in the same quantum state. That is, two or more than two fermions cannot exist in the same quantum state, which is the Pauli exclusion principle. Therefore, Pauli exclusion principle is also proved by using with the help of Slater's determinant for n identical particles also. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.